Do you feel कि जहाँ पे एक लीडर है, एक ही फैमिली है, या डिसाइडेड है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, वहाँ पे उनको देयर इज़ नो फियर दैट दे कैन एवर बी डिथ्रोन्ड? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो चोजन वंस है. वो ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगा अगर वो लीडर अच्छा हुआ, कि ये नेशन जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर 5 साल में चीज़ें चेंज होगी, हर 4 साल में चीज़ें चेंज होगी. सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपने दिया, अगर लीडर बहुत अच्छा हुआ तो इन द शॉर्ट टर्म दे विल ग्रो फास्टर. अगेन चाइना इज प्रूफ. सरकार ने कह दिया यहाँ से यहाँ तक सड़क बनेगी, आपका घर अगर बीच में, हमें नहीं फर्क पड़ता, वो घर टूटेगा, सड़क बनेगी. हाँ. सड़क बन भी जाएगी. इंडिया में वो सड़क बनानी हो तो आप बोलोगे कि घर के यहाँ से निकलेगी, उसके बाद पहले एक्टिविस्ट आएंगे, उसके बाद पहले कोर्ट केस होगा, वो कोर्ट केस चलेगा 10-15 साल, उसके बाद सरकार बदल जाएगी, वो कहेगी यहाँ से नहीं, यहाँ से जानी चाहिए सड़क, फिर वही प्रोसेस यहाँ से फॉलो होगा, 20 साल के बाद सड़क बनेगी. India or any other. Democracy. This is how it works. But this first country will only progress according to me in the short term, because when a person, no matter how good a leader, no matter how good, we are all humans. And that sense of power leads to hubris, leads to a flawed belief that only you know what is best for your people. That is wrong. And that depends a lot on who's filling your ears. So if 5 years, 6 years में वो change हो गए, तो even though you're the best and you understand your people very good, still you'll fail. Yeah. Or you'll fail, or your people may not want what you think is the best for them. A whole lot of things can happen. But that can happen in democracy also, no? Yeah, it happens in democracy. It very much does. But then at least you have the promise that 5 years later, 10 years later, 15 years later, something will change. But in a dictatorship, what happens? You have to dethrone. There is a revolution. And unfortunately, what happens after a revolution is that there is more chaos. तो ये पूरा अरब स्प्रिंग 2011 के बाद शुरू हुआ. कितने सारे देशों में डेमोक्रेसी लाओ भाई, डेमोक्रेसी लाओ. ट्यूनीशिया में हुआ, और इजिप्ट में हमने देखा, दे थ्रू अवे, overthrew a long time dictator. Libya. What has happened to these countries now? They are worse off. बस एक डेमोक्रेसी का क्या करोगे? डेमोक्रेसी से नौकरी नहीं आती है, डेमोक्रेसी से खाना नहीं आता है, डेमोक्रेसी से घर नहीं बनते हैं. सो नाउ पीपल आर सेइंग व्हाट डू वी डू विद दैट डेमोक्रेसी? लुक एट नेपाल. Nepal had a monarchy. It had such a bad and bloody end with the palace massacre. And then in the last 2 decades तो नहीं हुए, a little less than that. एक सरकार अमूमन 1 साल भी नहीं चलती है. This is the ultimate game of thrones. पीपल की वही 3 पार्टीज़ हैं, कभी वो 2 पार्टनर बन जाते हैं, कभी 2 एलाइज बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है हम पावर शेयरिंग करेंगे, फिर जब उसका प्राइम मिनिस्टर का हटने का समय आता है वो कहता है मैं नहीं हटूंगा, फिर सरकार गिर जाती है. That is what's happening. Young people who not read history are now protesting in Nepal saying we want the monarchy back because democracy is not working. So democracy is not perfect. Democracy is not the answer to all the problems, but it's your best bet. You have to make it work. And why do you think कि अगर जिन nations में dictatorship थी, monarchy थी, autocracy थी, उन nations में जब protest होके जैसे तैसे करके democracy लोग लेके आ गए, for example Egypt and Nepal, फिर democracy चल नहीं रही है? क्योंकि institutions नहीं है, क्योंकि आपने vacuum create कर दी. उस vacuum को भरेगा कौन? आपको पता नहीं है. The revolution, the overthrow of a dictator is the easy part. The rebuilding of a country is the harder part. Yeah. Because when you're trying to rebuild, then a lot of players come and say कि भाई ये हमने किया, हमें भी, we all want to be. And whenever there are 2 or more people, there is a power structure. Yes. One person wants to lead or 2 people. The more contending leaders, the more chaos. And these are leaders who have never operated in a democratic framework. They don't know what it is like. I mean, think of something like South Korea, which is seen as like a mature democracy now, yes, of late. What did their president do? He brought in martial law. But the institutions were so strong that despite the pressure, despite the resistance, the parliament met and vetoed it and restored the system. Yeah. That is the strength of institutions. Your courts, your security forces, they have to be able to operate independently
Not and under the influence. not under the influence of those in power. Only then will a democracy function. Do you think we have that? We have that, yes. Our institutions are strong enough to not to be bowed down to any government? There are pressures, I'm sure. There are pulls and pushes. But yes, we have an independent judiciary. We have an army that follows the most professional standards in the world and operates in a way that is good for the country. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.